Very good afternoon, guys. Very good afternoon. This is the third lecture of the class of vectors. This is the third lecture of the class of third lecture of vector calculus. So if you haven't seen the previous two lectures, this is all those two lectures are available on the YouTube platform on the same channel Unacademy Code. Okay, you can watch those two lectures also. In those two lectures we discussed about the basics of vectors and we discussed about the gradient and divergence and directional derivative. Today's class is about the practice questions on the vector calculus. ठीक है, new batch are starting for the GATE 2022. New batches are starting for the GATE 2022 and 2023. So if any of your friends, your juniors, your mate है ना is preparing for GATE, must recommend him. Okay, that Unacademy is going to start the new courses. ठीक है, and must recommend him to me. Okay, कि अंकुर सर is there to take care. ठीक है, और must tell him to use the code अंकुर 073. ठीक है, ध्यान रखना इस कोड का, खास ख्याल रखना इस कोड का, बहुत ज़रूरी है. ओके, so that for the GATE 2022 I can guide them in the best possible way. ओके, तो ये न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. इस न्यू बैच की डिटेल ध्यान रखना. एंड दोज हु आर न्यू इज नॉट इन दिस ग्रुप, दे कैन ज्वाइन दिस t.me/ankur073. this is the link of my telegram channel t.me/ankur073, where I put all the notifications related to the classes, quizzes and the chemical engineering. ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर इज द नेम ऑफ दिस चैनल एंड t.me/ankur073 इज द लिंक टू दिस चैनल. सो मस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड dd means directional derivative. Find the directional derivative of the field. Okay, do it guys, do this question.
वेरी गुड आफ्टरनून गाइस. आई होप एवरीवन रोट दिस क्वेश्चन. और काफ़ी लोग इसके सॉल्यूशन तक भी आने वाले होंगे. ठीक है. आई जस्ट वांट कि एक बार आप सारे क्वेश्चंस लिख लो वन बाय वन, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है. जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस. ओके. सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. साथ के साथ लिखते रहना आप. ओके. Find the area of parallelogram whose adjacent whose adjacent sides whose adjacent sides are whose adjacent sides are I cap minus 2 j cap plus 3 k cap and 2 y cap plus j cap minus 4 k cap. Okay. Note down the next question. Question number next. Question number 3. If the vectors 4 I cap plus 5 j cap plus k cap no, remove this. The correct one is 2 I cap minus j cap plus k cap. 2 I cap minus j cap plus k cap I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and 3 I cap plus a j cap 3 I cap plus a j cap plus 5 k cap are coplanar then find the value of a. Okay. Next question. Find the angle between the surfaces. Find the angle between the surfaces x square plus y square plus z square equals to 9 and x square plus y square minus z
is equals to 3 at the point 2 minus 1 2. Next question. If the surface 5x square minus 2byz is equals to 9x, be orthogonal to the surface 4x square y plus z cube is equals to 4 at the point 1 minus 1 and 2, then b is equal to option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. Next question. Find the unit normal to the surface. Find the unit normal to the surface x y cube z square is equals to 4 at minus 1 and 2. Next question. Find the directional derivative, also known as sometimes rate of change, of phi is equals to x y z in the direction normal to the surface x square y plus y square z plus z square x. X square y plus y square z नहीं, x square y plus y square x
एंड जेड स्क्वायर के साथ है वाई, जेड स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 3 at the point 1 1 1. Next question. Find the constants m and n such that the surfaces mx square minus 2nyz is equals to m plus 4 into x will be orthogonal to the surface. Four x square y plus z cube is equals to 4 at the point 1 minus 1 2. Next question. Find the values of constants lambda and mu so that the surfaces lambda x square minus mu yz is equals to lambda plus 2 into x and 4x square y plus z cube is equals to 4. Intersect orthogonally at the point 1 minus 1 2. Next question.
Find the greatest rate of increase of phi equals to x square yz plus 4xz square at 1 minus 2 1 in the direction of two I cap minus j cap minus 2k cap. Find ये हटा दो, बस इतना ही है. This is the only question. Okay. Next question. For the function phi equals to x divided by x square plus y square, find the magnitude of the directional derivative. Along a line making an angle of 30 degree with the positive x-axis at 0, 2. Next question. If the directional derivative of phi equals to ax square y plus by square z plus cz square x at the point 1 1 1 has
has maximum magnitude 15 in the direction parallel to the line z by 1. Find the values of A, B and C. Next question. Find the direction in which directional derivative of phi is equals to x square minus y square divided by xy at 1, 1 is 0. Option A, I cap minus j cap by root 2, I cap plus j cap by root 2, I cap plus j cap, I cap minus j cap. Next question. The temperature of the points in space is given by x square plus y square minus z. A mosquito located at 1, 1, 2 desires to fly in such a direction that it will get warm as soon as possible. In what direction should it move?
Next question. Find the directional derivative of divergence of u vector at the point 1, 2, 2 in the direction of the outer normal of the sphere x square plus y square plus z square equals to 9 for u vector is equals to x to the power 4 I cap plus y to the power 4 j cap plus z to the power 4 k cap. Next question. If the velocity vector is given as x plus 3y I cap plus y minus 3z k cap plus x minus 2z I j, यहाँ पे j आएगा k, and then check whether the given vector is given field और आप बोल सकते हो fluid is incompressible. Field is incompressible. ओके गाइस, सो ये 16 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इनमें से किसी क्वेश्चन की स्लाइड आपको देखनी है तो मुझे बता दो, मैं आपको दिखा देता हूं. एनी क्वेश्चन यू मिस्ड एंड यू वांट टू सी द स्लाइड अगेन, लेट मी नो.
Okay, all 16 have been noted down by everyone. Yes. Okay. Okay, 16 question. 16 minutes are there. Take 16 minutes and then in the last 16 minutes we will solve these questions. ठीक है? Solve this question. एक बार इनको solve करो. Find the question in direction. Find the direction in which DD of 5 वाला क्वेश्चन का स्लाइड. मेरे भाई क्वेश्चन नंबर बताओ तो फिर. क्वेश्चन नंबर में सब में क्वेश्चन नंबर लिखा है ना. कौन से क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हो? डीडी तो सब में ही निकालना है. सारे क्वेश्चन डीडी के तो दिए मैंने. ओके गाइस, स्टार्ट सॉल्विंग. डोंट वेस्ट टाइम. सारे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो. हार्डली 15 मिनट का काम है सब सोल्व करना. जस्ट 15 मिनट्स. कोई सोल्व हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है. जस्ट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो ट्राई टू फाइंड की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. जस्ट राइट डाउन दैट प्रॉब्लम एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, just attempt every question. If you are able to solve, it's good. If you are not able to solve, great. Just write down the point or the problem where you get stuck, and after writing down, move on to the next question. Question number 12. Divya is saying question number 12. ये लो क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की स्लाइड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 4 की स्लाइड। ये क्वेश्चन 4 की स्लाइड। एंड क्वेश्चन 13 की स्लाइड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो फिल। थैंक यू, थैंक यू। गाइस ये वाली पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा, सो दैट आप बाद में भी इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। गाइस जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए तो लेट मी नो कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए।
गाइस क्या हाल चाल है, कहाँ तक पहुंचे? ग्यारह पे है। ओके, एक बार कर्ल के बारे में लिख लो। ठीक है, राइट डाउन अबाउट द कर्ल। कर्ल of a vector field. Yesterday we studied the divergence. Today we will study the curl. So what is curl? It is defined as the cross product of the gradient and the vector f, also written as curl of f. Okay, and how to determine the curl of f? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. So it is I j k. What is the coefficient of grad? It is del by del x, del by del y, del by del z. And what is the coefficient of vector f? The coefficient of vector f are f1, f2, f3. In this way we will determine the value of curl of f. ये तो हो गया मैथमेटिक्स. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट मीन्स ज्योमेट्रिकली? इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है? ज्योमेट्रिकली कर्ल गिव्स अस the information about रोटेशन. ये रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. रोटेशन. Okay, so what is our velocity vector? Our velocity vector is defined as the angular velocity vector with the cross product of r vector. And what is r? R vector is the position vector at any point on the rotating body. Okay, now if we take the curl of the velocity vector, it means grad cross v. And what is v? V is grad cross omega cross r. Okay, grad cross omega cross r. Now what is omega cross r? If you calculate omega cross r, grad cross omega cross r. Okay, if you solve this product, there is a derivation, guys. You can see that in the book. Okay, this will ultimately comes out to be 2 omega. इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है 2 ओमेगा. दिस इज द फाइनल वैल्यू. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ v. So what is curl of v? Ultimately I can write curl of the vector v is twice of the angular velocity. So what is angular velocity? Angular velocity will be half of curl of the linear velocity. So it simply means that if the curl of the velocity vector is non-zero, it means that the field is rotational. Field is rotational.
and if curl of the velocity vector is 0, it means that the field is irrotational. Very simple, है ना? It all depends upon the curl. So curl gives us the information about the velocity vector. It gives us the information about the rotational thing. If curl is non-zero, the field will be rotating field. If it is zero, it will be irrotational field. So this is the geometrical interpretation of the curl. ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो साथ में प्रैक्टिस के लिए. ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द divergence and curl of velocity vector given as x, y, z I cap plus 3x square y j cap plus x z square x z square minus y square z k cap at 2 minus 1 1. एक क्वेश्चन और लिख लो. Determine the constants A and B such that the curl of the vector A given as 2xy plus 3yz I cap plus x square plus axz minus 4z square j cap minus 3xy plus byz k cap is 0. ओके गाइस, सो आज आपका बड़ा सिंपल काम है. कर्ल तक हमने कंप्लीट कर लिया अपने वेक्टर्स. ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट एंड दैट पार्ट इज लाइन इंटीग्रल एंड सम प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो आज ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना. जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए वो क्वेश्चन कल आप पूछ लेना. ठीक है, और आज कर लेना याद से, बिकॉज अगर आप करोगे, आप अपनी डेडिकेशन दिखाओगे तो मैं अपनी डेडिकेशन दिखाऊंगा, है ना. अगेन वही बात है, जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने मन तोड़ा है, वेक्टर में भी मन टूट जाएगा. ठीक है, सो डू ऑल द क्वेश्चंस टुडे एंड देन यू कैन आस्क द डाउट्स टुमारो, एंड टुमारो विल ऑल्सो स्टडी द लाइन इंटीग्रल. So thank you guys, bye bye, take care. We'll see you in the probability class at 5 p.m.